to lace a shoe, you can like. अरे तू बोल कर क्या? आज तक जियो क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, फोन डेरा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और मैं आपको लेके जाता हूं पिछले 2 हफ्ते पहले की फुटेज में। वो है फोनरा मीटअप की। हमने होस्ट किया था फोनरा मीटअप हैदराबाद में और मैंने इनवाइट किया था हमारे दोस्त गौरव को, टेक्निकल गुरुजी दुबई से, और गीकी रंजीत को जो है हैदराबाद से, मतलब इसी शहर से। और ऐसे ही कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग मीटअप्स हम करने वाले हैं कुछ अगले शहरों में। तो आप नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में बताइए हम कौन से सिटी में फोनरा मीटअप होस्ट करें। और ये वीडियो करीब था 1.5 से 2 घंटे फुटेज का और मैंने उसको चॉप डाउन किया थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा सबको, नहीं ज़्यादातर ब्लॉगर्स को, व्लॉगर्स को, या फिर उन लोगों को जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बिफोर आप इस कंटेंट को ही देख लें। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो हमने बात की थी रिलायंस जियो के द्वारा क्या क्या ग्रोथ हुई है सारे यूट्यूब चैनल्स के लिए, या फिर आप ब्लॉगिंग कैसे शुरू कर सकते हैं और आप यूट्यूब के ऊपर कैसे अपना पैसा कमा सकते हैं, और हमारी फोनरा की जर्नी, और हमने कुछ फोनरा के जो बहुत ही एक्सक्लूसिव मग्स है वो भी हमारे कुछ फॉलोअर्स को वहाँ पर दिए थे। तो ये सारा इवेंट हुआ था उस फोनरा मीटअप में और यहाँ पर आप ये सारा कंटेंट देख सकते हैं। तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फोनरा को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं फटाफट इस फोनरा मीटअप का कंटेंट। This is Gaurav. This is Randy. एंड व्हाई आर यू हियर? Why are we here? That's an interesting thing. Let's talk about blogging, YouTubing, and stuff. One of the that's known as Geeky Ranjit, and you introduce yourself. Okay. So my name is Gaurav and I'm running a channel in the name of Technical Guruji, doing similar stuff but in Hindi, and he's doing in English. Now even he's having a channel like Hyderabadi Hindi wala. Yeah, that's all. So like we are making videos on technology, some specific gadget reviews or something. Yeah. Let's call Gaurav and ask him his experience about Jio and if any connection with Jio and his YouTube channel's growth. Okay. I got a random question though. So like YouTube and Jio are like working together, growing together for like you can say mutual benefits or something, like not exactly related, but like behind the scenes, like you can all see the growth, the number of views, or maybe the subscribers, or maybe the people coming online because of Jio, and video being the most watched content. Like if given youngster data, like okay, you have data, you have this phone, like the first thing would be he'll be watching some video, maybe music. Like वो जाके आपको ब्लॉग नहीं पड़ेगा maybe. Like that would not be the top priority, but like YouTube and It's next video. like video content is like the most viewed thing, and in YouTube, given the variety, it's not just about you can just see a movie trailer for maybe some exclusive shows or something. You can like almost see everything, like how to tie a tie or how to lace a shoe. You can like अरे तू बोल कर क्या? आज तक जियो क्या हुआ? I had a channel for. ये हैदराबादी हिंदी आ गया अभी. I had a channel for. They don't record in post-mod. I had a channel for about 6 years. YouTube channel. Okay, Jio came last year. Okay, for that channel, I don't even recall. यार, first year I had 1600 subscribers. आपको 2000 से तो मैं सबसे किया. तू एक साल के बाद किया था. And I think so. It took me about 3.5 years to reach 1 lakh subscribers. After Jio came, inspired by him, चलो देसी लैंग्वेज में हिंदी में बनाते हैं. That channel, I think so. This is because of Jio. I started that Hindi channel about 8-9 months ago. 3 years late. I started, but I didn't pay August, attention to September, it. Just I paid attention on that channel for 40 days, and I got 95,000 subscribers in 40 days. And I think so. This wouldn't have been possible अगर Jio नहीं था. Well, I see a lot of new audience there in that channel. Abhi the growth is like completely exponential. So it is like new people coming to the internet. Talking about numbers, like I have completed last May 1 lakh subscribers. September the Jio thing came in like to the masses. उससे पहले वो live phone ना था तो इतना like reach नहीं था. September I was like at 300,000 subscribers. This year in February it was 1 million, and now it's 2.1 million approximately. So within 3 months, almost double. And now I can plan like 3 million or 4 million के बाद. I'll tell you, So regional growth is channels, exponential. because not just him. I have a lot of friends on the YouTube. जो regional channels का उन लोग का growth बहुत ज़्यादा हुआ है. Exponential, totally. And they were also asking, what are we doing? What did we do? Some of them like. So that was the thing. So Jio has given life to everyone. And it has enabled connectivity. Talking Jio and YouTube, I have this interesting stuff. YouTube पे एक channel है, मैं नाम भूल गया हूँ. वो चैनल पे कुछ 50 से 60 वीडियोस हैं.
सब्सक्राइबर्स कुछ 4 या 5 लाख हैं. All the 50 videos are about Jio. Like Jio FAQs kind of. Yeah. कि Let's not name that. But नहीं, the मेरे idea को is- नाम याद नहीं है. I know that. हाँ. He doesn't even show his face. He just has a PPT and he just talks like Dandaran offer. No, but basically it is like FAQ kind of stuff कि जिसको नहीं कुछ अगर डाउट्स है तो वो आके कुछ चैनल पे वीडियो देखता है तो इज लाइक ऑल योर ऑफर्स एक्सप्लेन. अगर कुछ भी डाउट है कि अच्छा इसके बाद में क्या होगा, 2 GB के बाद में क्या होगा, ये नहीं करवाया तो क्या, अगर ये पोर्ट किया तो क्या, या ये नहीं किया तो क्या, तो लाइक हेल्पलाइन Jio. मेरे को नहीं मालूम. But then also Jio has made up like Inchak Puja and so many. This is stars. They are YouTube like to some extent. I think like internet is slightly moved to like not the right hands because अभी क्या है कि for example given mature guy जो उसको use कर रहा है, उसके लिए properly pay भी कर रहा है, तो he is like much more cautious about what he is doing. But given like internet to everyone, उस केस में क्या है कि you can't control really like what exactly that guy would be doing on internet. तो अभी YouTube India में trending में भी चीजें आ रही हैं टेढ़ी मेढ़ी because वो कोई कुछ भी सर्च के देखा तो actually like videos of the different categories are getting more number of A views. lot of new audience came online because of Jio, and suddenly you get exposed. So Like you लॉटरी मिल गया 1 करोड़ तो समझ आ रहा है कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा. तो सेम थिंग इज लाइक जियो डेटा मिल गया बहुत सारा तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ एक्चुअली यूज Yes, करूँ. again, Wilkie also has But to true, fix that. how many of you agree यार Jio आने के बाद the data crunch that we had, Hyderabad में broadband was good, was sort of solved. Do you guys agree? I feel that was there because Hyderabad के बाहर जब निकलते हैं, mostly we use our Jio SIM as hotspot and route is use it as it. Again, this is all the genuine feedback. It's not even Yeah. sponsored with Jio. Yeah. The place is hosted by them, nothing else. And these guys are just come up randomly. So Talking- कुछ नहीं है. Talking And we have come here to actually take feedback and go back. talking about like for example Because see, you might be using Airtel or whatever. Jio आने से यार उनको भी improve करना पड़ा. अभी तक चूस रहे थे अपन लोग को. नहीं I used to pay 250 for 1 GB. I still pay on my 255 postpaid. I made a video 5 years ago. just imagine अभी 1 साल पहले सभी लोग 1 GB से पूरा महीना गुजारा कर रहे थे ना. वो ऑटो ऐप्स को ऑटो अपडेट नहीं करना है या फिर जब वाईफाई मिलेगा तभी सारा काम कर लूंगा, बाकी फोन पे सिर्फ व्हाट्सएप पे इमेजेस भी नहीं आनी है, वो भी ऑटो अपडेट नहीं करना है. बिकॉज अभी मैं बताता हूँ कॉस्ट के मामले में लाइक दिस इज अ कॉमन थिंग. इंडिया में ना परसेप्शन है भाई कि डेटा या कॉल महंगी है. इट इज एक्चुअली आई थिंक कॉल्स आर चीपेस्ट इन द वर्ल्ड. दुबई में जो रेट है डेटा का 1800 रुपए इंडियन करेंसी में 1 GB मिलता है 1 महीने का. You Like don't 100 pay- dirham. You don't नहीं, pay taxes also, right? नहीं. Anyway, you have a lot of money. even like अभी ये अगर रेट पे डेटा जस्ट इमेजिन कि अभी कितना 300 रुपए में या कितना जीबी या कितना, तो लाइक ग्लोबली कोई टच भी नहीं कर रहा है आपस में यार. इट्स लाइक ह्यूज डिफरेंस. तो वो इंडिया में लाइक ये जो चीज है काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन बेसिकली. और उससे लाइक बीट यंगस्टर्स और बीट गाइस जो आज 50 साल के हैं जिन्होंने आज तक फोन में ठीक से इंटरनेट यूज नहीं किया, वो भी आज कुछ ना कुछ तो कर रहा है एटलीस्ट. So that way, except the one thing I feel is that Jio has made that habit change, like what Uber has been doing, like free में cabs देकर लोगों को habit बना रहा है. That's the only con I see, wherein not a con technical, but it's trying to change habits. People who are using 1 GB in a month now they People are not used to it, getting used अगर to उसका it. 1 GB कम पड़ रहा है कि ये क्या है. But it's opened a lot of opportunities for all the businesses. Like I would say recently it's great speaking for to- YouTubers and bloggers, yeah. No, apart from that, all Because the when I used to have a challenge जब तो अभी अच्छा हुआ. Uploading videos on YouTube was sort of a nightmare. Yesterday we faced that. We were in what is this? Ambi Valley वहाँ गए. We made a small video 1.5 मिनट का था, 120 MB का. I had to be awake till 3 AM in the 11 बजे रात में शुरू करा. 3 बजे तक रात तक मेरे को वेट करना पड़ा. That's the difference. that's a big difference. Basically talking about I think let's say Digital India or something, अगर डेटा नहीं है प्रॉपर्ली स्प्रेड आउट ठीक तरीके से तो ऑल दो इनिशिएटिव्स आर लाइक ऑलमोस्ट अ ब्लैंक थिंग. एटलीस्ट अगर किसी के पास में फोन है, डेटा है, बीट ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्यूटर पे किसी भी तरीके से, तो एटलीस्ट ऑल दो सर्विसेज जो भी अगर कुछ हैं गवर्नमेंट के प्लान्स भी हैं तो एटलीस्ट वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो सकते हैं. लाइक टॉकिंग अबाउट लेट्स अज्यूम दिस थिंग. अभी जब नोट बैन हुआ उस टाइम पे अगर जियो नहीं होता था तो क्या पेटीएम ऐसा सक्सेसफुल हो पाता? आई डोंट थिंक सो. क्या लोग मोबाइल पेमेंट्स इतने फ्रीक्वेंटली कर पाते? मे बी क्या पता. लेकिन It was only Hyderabad which had this data benefits with Act. Yeah. Yeah. We always keep saying positive about Act. That's because the service There is was actually- one but now they're blogger talking from about data. Delhi who migrated to Hyderabad because we had Better Hyderabad Wi-Fi. had good connection. That's a fact. I won't name him. Yeah. Before Jio launched, what was the percentage of like when you used to talk about telecom? How often did you speak about telecom as an industry?
I used to, but every time I used to get a call from those guys. Like, No, even like before Jio, there were ज़्यादा no नहीं, such- ज़्यादा there नहीं, were like not no that. such news coming in. कुछ था ही नहीं ना, Nothing. like it was all blank. वो like nothing exciting as a news coming in based on like telecoms and all. But अभी तो daily कुछ ना कुछ update आ रहा है. So about us, we run the website called Phone Radar, which is purely about phone website. And before Jio, Airtel used to send us press releases once in a while, like Assam के कहीं या गुवाहाटी में कहीं 3G launch कर रहे हैं, deployment हो रहा है ना, तो we did not care about it. Once Jio was going to come, we had added a new category called we telecom. did a joke, right? Airtel launched in 4G. 4G. You were there, I was there. They invited us. So finally we decided, said, oh यार 4G आ गया Airtel में 3G की speed तो आ ही जाएगी. That was the fact. I want one pro tip from every one of you that will help them gain what you are right now in the next 5 years. Okay. One pro tip. Given Jio, not even next 5 years, maybe next couple of years. नहीं मेरा तो हमेशा I believe in this because I've changed my career a lot. Do यार what you feel अंदर से. Just don't try to like ये कर रहा है कोई somebody is trying to do it like that. So that's why you're doing it. Yesterday also somebody was asked no I should make a YouTube channel. I told I have to make a YouTube channel for money. I told गया था. You तो won't गया get it. तू तो गया. You won't get it. ये whole logic बनाऊंगा channel खाली पैसे के लिए. He was very blunt. So I told him on his face and his face was like this. जब तक तेरे को passion नहीं है कोई चीज का हो. और many people get confused in that. Follow my. It took me यार 1 year 160 वीडियो 1600 सब्सक्राइबर. आज दिन में आते उससे ज़्यादा. But it took time. So follow your passion. Statistically speaking, I am a failure in YouTube. If you look my first 3 years stats. But I didn't give up because that was my passion. So that's the only advice I have for bloggers या जो भी है. अगर अंदर से पैशन है तो करो यार क्योंकि ये कर रहा है या ये बड़ा बन गया अमित भवानी बहुत तो बड़ा ब्लॉगर बन गया खाली उसके लिए कर रहे हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. But talking similar things like given like you all are youngsters, तो उसमें क्या होता है कि we always have some targets कि okay क्या चाहिए ना phone, laptop, bike, girlfriend खत्म मतलब like 12th first year like जो है students हैं जो youngsters हैं वो targets होते हैं. अब उसके लिए we don't have the funds maybe. तो we see YouTube और maybe internet as a money making machine कि YouTube पे 2 वीडियो बनाऊंगा ट्रेंडिंग में आएगा इतना पैसा इतना टारगेट 3 महीने में 1 लाख मेरा बाइक डन मतलब खत्म like we always have those kind of targets लेकिन वो कभी भी प्रैक्टिकली होते नहीं है. और उस केस में लाइक इफ यू आर ऑन यूट्यूब और इफ यू आर ऑन सम वेबसाइट समथिंग तो उस केस में क्या है कि अगर आपके पास पैशन नहीं है आप जेन्युइनली नहीं कर रहे हो आप फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट कर रहे हो कि मान भाई 4 महीने में मेरे को पैसा मिल जाएगा कुछ भी हो जाएगा तो वो नहीं होने वाला. हाँ अगर आप कर रहे हो फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट इफ यू आर यू नो समवन हु वांट्स टू शेयर व्हाटएवर यू नो टू द मासेस एंड उस केस में इफ यू आर कंसिस्टेंट इफ यू आर क्रिएटिव इफ यू आर लाइक यू नो कम्युनिकेटिंग विद योर व्यूअर्स एंड ऑल तो वो आज नहीं 6 महीने के बाद में बाइक पे आ जाएगी सब कुछ आ जाएगा बट विल टेक सम टाइम. तो उस केस में अगर आपका पैशन है तो आप वहां तक पहुंच पाओगे अदरवाइज आप 2 महीने के बाद में गिव अप कर दोगे चैनल पड़ा होगा यहीं पे 100 सब्सक्राइबर्स लेके कुछ होगा भी नहीं. दिस इज व्हाट इट इज बिकॉज डेली इंटरनेट पे कितने नए काफी लोग वो भी हैं जो क्रिएट भी कर रहे हैं डेली का नहीं कितने चैनल बन रहे हैं कितने बन रहे YouTube channels that were created बनाए हैं and they gave up in 6 months. Yeah. So and I was very blunt with those people who asked me. I can give the motive जब बात कर रहा हूँ वाला तू चालू कर तू 6 महीने में बंद करेगा. Take it from me. Because the motive जो था technically follow your own passion. that's If you what he's feel- saying in blogging. If you feel like you're good in cooking, make a cooking channel. It doesn't. It's nothing wrong. I mean, I have started making cooking stories actually, at least on Instagram, and I feel like I'll start doing that. I mean, there's nothing wrong in that. Yaman. Yaman is a good example. There's a YouTube. He's from Hyderabad, right? 13 years, Yes. youngest chef, author, whatever. on YouTube yes. Generally, you feel that Sanjeev Kapoor is famous for cooking and stuff, and वो सब चले गए. अभी आज- No one actually follows them. रंजीत टैग कर रहे हैं करके अगर आपका इंटरेस्ट टैग में नहीं भी है जस्ट यू सी हिम ऑन YouTube और आपको लगता है कि मैं टैग कर लूंगा अरे तो रोज नया गैजेट लाता है यार कहाँ से लाता है एग्जैक्टली तो Doesn't अभी work मतलब आप खुद से क्या चीज में बेस्ट हो वो देखो लाइक इंटरनेट पे यार इन्फॉर्मेशन 50 तरह की है सब तरह के ऑडियंसेस हैं सबकी अपनी अपनी Yeah. लाइक एवरीबॉडी इज हैविंग देयर ओन मार्केट तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज चलती है सब कुछ चलता है. And people assume that tech is one of the fastest growing. No, it's entertainment. You can actually It's entertainment. not Tinchak Puja, but other categories are there. Like, you know, Become a rapper man. what is Rahul Gandhi doing? या फिर विराट कोहली अभी अनुष्का के साथ कहाँ जा रहा है? And you can do And that. lots I of mean, different there are things, multiple yeah. things people are doing. If you're a good presenter, you can just talk on entertainment. That's going to work out for you. You don't have to just copy someone की okay अमित का वेबसाइट चल रहा है तो मैं इसी तरह का ब्लॉग बनाऊंगा इसी तरह स्टोरी बनाऊंगा. वो नहीं Doesn't चलेगा. work out because I try to my whole focus is again I have a good team so they write the content but my whole focus is on getting the content exclusive content and that's something you might not get
No, I'll give you an example. Because Phone Radar, I know him from a long time now. When he started Phone Radar, he kept it on secret for 6 months and he launched it. And launch करने के बाद 5 days का I called him. Why did you start it? I mean, it's going to be so tough. I like the answer he gave. I'm not bothered about the revenue part as of now. And it took him time. तो वाला बहुत time लगेगा. So if that is the thing, but मैं आज start करूँगा, नहीं होता है. नहीं होता. I mean, the focus should be, money should be the last priority for you. If you are into anything, even if be your career also, if you're going to a job and if you see at the job package, it's not going to work out. Look at the hierarchical system. If you're learning something from the team, or if the company is open to new ideas and all the other factors, then look at the money. Money will anyway follow because you should be valuable. Money कैसे भी आ जाएगा. I mean, कोई भी job हो. सारा 3 Idiots वाला ज्ञान चल रहा है आपके. 3 Idiots. I always give them. My inspiration movie is 3 Idiots. यार अपना बस काम करो. बाकी किसी झक मार के आएंगे अगर अच्छा काम कर रहे हो. 2000 और आप काम में 8 में आई थी मूवी, उसके बाद में स्टार्ट किया. When are we going to Ladakh? In the last scene मुझे. यार लद्दाख यार Let's seriously. recreate that part. चल 9:31 around that something. 9:30 था. You have some random. अच्छा Phone Radar. When did he start Phone Radar? 2001. No. 2001, yeah. 2003. He told me. क्या मैं क्या वो दिख रहा हूँ क्या? Yes. Okay, Gaurav, you have any questions? It's like a fun thing. So this is the like जो सबसे पहले देगा ना उसका वो मिलेगा. OnePlus 5 में टोटल कितने मेगापिक्सल कैमरास हैं तीनों मिला के? 16. तीनों मिला के OnePlus से ज्यादा मेरा phone है. What? 36. 36 in total. 16 20 ना तीनों मिला के. That's what. 20-16. हाँ तो 32 और 20 52 ना. ये सवाल कहाँ से आया? ऐसे ही लगता है. ऐसे एक fictitious question. अब कौन सा ब्रांड अब वाइड डिवीजन तो हो गया, नॉर्मल हो गया, 2X हो गया, तीनों कौन लेके आएगा? कौन सा ब्रांड लेके आ सकता है? ओप्पो वो भी फ्रंट सेल्फी के लिए लाएगा. करेक्ट बोला. If you can guess. वही कर सकते सेल्फी. टेक के सवाल पूछने का. नहीं ऐसे. Anything? Okay, I have interesting. First question. I have phone with 8 GB RAM. Asus का. Asus का है जो अभी So you already got a mug, then you are disqualified. Next question. Next question. Okay, I have 2 questions. Okay. Not people might know. I have some raw stats. OnePlus 5 launched 2 models, 6 GB RAM and 8 GB RAM. According to you, which one is selling more, the 6 GB RAM variant or the 8 GB RAM? Who told it? Yeah, the I'm also bonkers. Why is everyone buying the 8 GB one? 6 no. Not officially, but Not mostly. मेरे को raw stats है. गलत बात. People are buying the 8 GB. I'm like not to buy. Maybe for 128. Maybe. It's like future proof. Maybe, People for feel the like 2 storage. साल के बाद भी अच्छा फोन चलेगा. Maybe. So I have 2 interesting questions. Pawan. First come first answer. Whoever says that. The first question is, what is Ranjit's age? 40. अब भी करा था मेरा बर्थडे का मालूम हो रहा है. करेक्ट बोला. You already got it. Give it to my What is Gaurav's age? 26. 36. 26. 27 मिल गया उनको. Below 27 only. 26. 91. 91. You had a copy of the passport. ये गलत है. 16. Oh my god. Below 27 only. 26. अब हो गया भाई, अब तो बता दिया. ये लास्ट में ट्यूबलाइट वाली बात हो रही है. The thing is that. Okay. Any other? Okay, Amit says. 32. 32. 31. Those are 34. 36 years older. 32. You did in a collab video. 32. Yes. अरे 32. सही तो बोला था तू तो गेस तो बोल तेरी एज है 32. 33, but the same guy told me, right? अच्छा अरे जो जिसको मग मिल गया आंसर मत करो. Yeah. So apart from Phone Radar, Amit had another popular blog. Okay, but this not many of you might be knowing. Original- For this, original- you must be you have to know really Amit very well. Amit was pretty famous. एक because of what? एक domain था उसका. क्या था? SEO advices. It was for ROMs, right? Custom.
Routing, right? Amit Bhavani direct. Everyone knows the answer. No. I'll tell you a real story. Amit ko I only started knowing him after the YouTube thing, and Amit in the blogging industry was considered the big guy. So in 2011, I think so, the first time I saw him, I knew he's from Hyderabad, but never met him. One of the YouTube events we had in Hyderabad, and that is the time I saw Amit. And trust me, I was so scared to speak to him. The Amit Bhavani was a big deal at that time. Seriously, he was a big deal. He didn't capitalize. But I don't know why. AmitBhavani.com was a big deal at that time. I don't know why he left it. It was like we catered into it. I shared blogging tips and then Yeah. catered into every kind of information. Because he was the only guy who used to actually share a lot of genuine information. Others used to publish bullshit. Faltu gang. Some of the numbers that people will be scared, he used to share. That's the Jab We Met moment. No, actually I was like, अरे होता ना feeling अरे इससे क्या हाथ मिलाएंगे, it's like. And But then, he's a very cool. Now I know him for a long time, and very cool. Okay, so original name of Phone Radar's YouTube channel. वो भी पागल हो जाएगा. वो यार बग लेके बैठा है जो. exactly. You shouldn't have. When do you think will he genuinely be buying the Tesla or not? Yes. मरवाने का question. We don't have answer for that. Hmm? We don't have answer for that. Elon Musk से पूछना पड़ेगा. I think नहीं है. But what motivated you? Genuine. First guy आते ही साला book किया. I don't know. I felt like Tesla is the next big. I've been following Elon Musk from a long time. Electric car, and then I realized But that. will you buy it? अगर सब्सिडी नहीं मिली तो? Because trust me, हाँ खरीदूंगा अगर इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी तो. Okay, so you have a twisted question. Yeah. I have a twisted answer. अगर You YouTube से will पैसा learn. कमाऊंगा So- मैं अगर YouTube से पैसा कमाऊंगा तो मैं खरीदूंगा. Yeah. नहीं मिली. But again, I have ordered it right now. I have not even paid the full amount. I just said $1,000 payment, and now I got to know that it's non-refundable. I thought it's refundable. उसने किया था देखो. Fear exercise. But yeah, let's see if it comes within an year or so. Might buy it. If you keep delaying, and then if they are playing Do you realize if it doesn't get subsidies, what will be the cost? I don't know, I heard like 40 lakhs or something. Yeah, I'm yeah. hoping it's going to 20 lakhs, $35,000. Yeah. The US pricing. It should be coming there because Modi has been to the Gigafactory in US. So कुछ ना कुछ तो होगा ही. Achha, let's ask, but this will be like not many people. Maybe hardcore phone radar users might know that. How big is the team of phone radar? Six members. I'm an intern in that company. Disqualified. इसको निकालो, ये मेरे को भी निकालना. So Shyam, anyway, whoever is first, whoever wants it, you can come and take it. That's it. Yes. सब टूट जाएगा वो तब तो. Then most of them have got it. So like, Yeah. anyone who has not got it, Yeah. Please. So. sadly another interview. तो ये था हैदराबाद में फोनरा मीटअप। और अगर आप यहाँ पर टिके हुए हैं इसका मतलब ये है कि आपको ये कंटेंट बहुत ही पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को आपके फेसबुक पे, ट्विटर पे और गूगल प्लस पे। और अगर आपको चाहते हैं कि कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग मीटअप्स करें या फिर इवेंट्स करें तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम हमारा नया मीटअप कहाँ पर करें, और हम ज़रूर वहाँ पर कोशिश करेंगे हमारे नए फोनरा मीटअप को होस्ट करने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए फोनरा को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मैं हूँ अमित और मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय।